Now today, let's start with chapter number 4, animation in PowerPoint. In this chapter, I will tell you about PowerPoint. We have different animation. What is animation? What is slide transition, animation pane? And then we will study how to insert a file. You have made a PowerPoint presentation and now you want to insert a sound, then how you will insert and how you will insert a video file and rehearse time. Now, let's start with the chapter, what are animation? Animation, they are the special effects that we can add to text and object on a slide. They can make audience, ये audience को pay करते attention to important points, control flow of information and make the presentation interesting. और ये presentation को कैसा बनाते हैं? Interesting बनाते हैं. And MS PowerPoint offers animation effect. हमें different animation effect देते हैं. And we have categorized into 4 categories. Entrance effect, emphasis effect, exit effect and motion. First is entrance effect. Entrance effect controls the manner in which an object is introduced into slide during the slideshow. किस तरीके से जो object है वो slide show में introduce है, it tells about that. Whether it appears, it fade, fly, bounce or zoom. Then we have emphasis effect. In this effect occurs when the object is on the slide during the slide. जब object कहाँ पे slide पे, जब slide show रहा उस time object कहाँ पे slide पे. They are used to emphasize the object and some of these effects are pulse, spin, underline, darken and fade. Exit effect controls the manner in which the object exits during the slide. And like these are disappear, fly out, split and weave. Motion path effect, if we talk about motion path effect, it enables the object to move from one place to another. ये भी different effect आपको turn होते हुए ये different shape में, loops में, arc में और line में भी. Now adding animation effect. If you want to add animation effect, there are some steps given that you have to follow. Select the text or object that you want to animate. Click on the animation tab, click on more arrow button. Then you will click on the more arrow button in animation group. The gallery of animation effect appear. Now click on the desired animation effect. You will click on the desired animation effect. After we have applied an animation to an object or a text, what you will notice, the number tag will be appear on the object. This implies that animation effect has been applied on the object. इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका animation effect है वो कहाँ applied हुआ है object. Adding multiple animation effect to object, we can add more than one animation effect on object using add animation option to advance animation group of the animation. Then, अगर आपको multiple करना, if you want to add multiple animation effect, then select the same object on which you want to apply multiple animation. Click on animation tab, click on add animation option, advanced animation group में जाओगे, जितने भी आपके effects है वो आपको यहाँ पे दिख जाए. Then you can click the desired effect you want to select. Now you will notice that 2 number text appear on the object and the second animation effect have been applied. Now you can also specify when animation should be played on clicking the drop down button. कि टाइमिंग ग्रुप में जाके आप ऐड कर सकते हो कि आप कहाँ पे एनिमेशन डालना है. On click and without previous. On click to start the menu after a mouse click. Preview में आपको करना पड़ेगा same time previous animation effect. आपको करना पड़ेगा previous पे जाना पड़ेगा. Then we have after previous to start the animation effect immediately. अगर आपको animation effect को immediately start करना है, after previous effect in the list finishes. To specify or set the timing of the effect, duration box available in the timing group. It helps you to change and control the speed of animation. आप इसमें क्या कर सकते हो? Speed को भी control कर सकते हो और change भी कर सकते हो. We can set delay time before the animation begins by using delay box. We can also use reorder animation button. आप reorder animation button का use करके भी move earlier या move later के option को choose करके animation effect आपका क्या हो जाता है? Appear होता है. Then we have slide transition. While watching films and cartoons, आप notice करते हो कि जो next scene begin होता है and one scene ends the way one slide follow the others. इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं. जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो आपके कहाँ पे होते हैं?
जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में चेंज हो. Now, to add a slide transition, there are the steps. Select the slide on which you want to add slide transition. आपको वो स्लाइड सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप क्या चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन. Click on the transition tab. Click on the more arrow button in the transition to the side group. और आप जितने भी इफेक्ट है उसको डिस्प्ले करो. Choose any of the transition. आप किसी भी तरीके के ट्रांजिशन इफेक्ट को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते. नाउ क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑप्शन. आप इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इन द ट्रांजिशन टू द स्लाइड एंड सेलेक्ट इफेक्ट ऑफ द चूज एंड ट्रांजिशन. जो भी आपको चूज एंड ट्रांजिशन उसके इफेक्ट को आप चूज कर सकते हैं. क्लिक ऑन द डिजायर्ड इफेक्ट टू सेलेक्ट एन इफेक्ट फॉर द चूज एंड ट्रांजिशन. आप क्या कर सकते हो, डिजायर्ड इफेक्ट को चूज कर सकते हैं. Click on the arrow next to sound to display list of transition, and then however over a sound you will hear in the sound you want. जो भी आपने साउंड ऐड करी, अगर आप उसको सुनना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे and then you will select the duration and in the time. Click to apply it, and if you want this, transition of all slide will be present. Now click on mouse click. If you want the slide to stay on the screen, what you will do, first you will slide to stay on screen till the user click the mouse or press the key. Check after and adjust the time you want the next slide to appear after a certain duration automatically. Then if you want to see how transition will look in the slideshow, click the preview button. It will be activated when you apply transition. ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा जैसे आप ट्रांजिशन इफेक्ट को डालें. Now we have animation pane. Now let us view, modify and reorder the animation effect applied to an object. It shows all animation effects for different objects on the current slide. It will order they will appear during the slide. Now display the animation pane. Now you have to display the animation pane. How you will display? Click on the animation tab. आप क्लिक करेंगे एनिमेशन टैब पे. क्लिक ऑन एनिमेशन पेन ऑप्शन इन द एडवांस एनिमेशन. Animation pane appear to the right side of the PowerPoint. You can click on to play all, and then you can preview the animation effect of the various objects. जैसा भी आप animation effect डालना चाहते हैं, we can reorder the animation pane effect by clicking on the animation effect. आप जो reorder वाला option होता है, ऐसे click वाला इस बटन पे जाके आप उसको change करें. Now inserting sound. To insert a sound file from the audio file to a slideshow, you will click on the slide and you want to add a audio. You can also insert tab. आप click करेंगे insert tab पे. Click on the drop down under the audio option and click on the audio on my PC. The insert audio dialog box. Now select the desired audio file. Click on the insert. फिर आप किस पे click करोगे? Insert बटन पे. Insert a recorded sound. अब आप क्या कर सकते हो? Recorded sound को insert कर सकते हो. You will click on the slide on which you want to add audio. Click on the insert tab. फिर आप insert tab पे click करोगे, and then you can you will click on the arrow of audio option and you can click on record audio. आप record audio पे जाके क्या कर सकते हैं? Audio sound dialog box appear होगा और आप audio को record कर. You can write the name of the audio recording. Click on the record button to start recording. आप क्या करोगे? रिकॉर्ड बटन क्लिक करोगे और स्टार्ट करोगे रिकॉर्ड. क्लिक ऑन द स्टॉप बटन व्हेन यू फिनिश रिकॉर्डिंग. यू कैन क्लिक ऑन द प्ले बटन टू लिसन द रिकॉर्डिंग एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओके बटन. द ऑडियो फाइल गेट्स इंसर्टेड इन द स्लाइड. जैसे आप इंसर्ट करोगे तो ऑडियो क्लिप का जो आइकन होता है ना, वो आपको शो होगा. द ऑडियो फॉर्मेट एंड प्लेबैक टैब जो होता है वो आपका अपीयर हो जाएगा ऑडियो टूल्स में. And we click on the audio clip icon on the slide. जैसे कि आप audio clip पे क्या करोगे? क्लिक करोगे. Then the playback tab as an option. एक playback tab का option हो. आपको यहाँ पे आप play across, volume, कोई loop करना है, कोई hide करना है, ये सब आप इसमें choose कर सकते. These are the effects you have to identify. Then we have inserting video file. If you have to insert a video file, how you will insert? सबसे पहले what you will do? You will click on the slide and add a audio. Click on insert tab. आप insert tab पे जाएंगे. Click on the down arrow under video option and the media group a menu.
Click on the device option, the insert video dialog box. Now select the desired video. आप desired video को set करेंगे, click करेंगे insert button. The video file gets added to the slide. और जो आपकी video file है वो slide में क्या होगी? Add हो जाएगी. And the playback tab has a video option group. जिसमें आप क्या करोगे, जो command है वो क्या करता है, control करता है how video play, और select करोगे desired option. Now rehearse timing. A presentation can be self-running using rehearse timing features. मतलब इसमें जो presentation है वो self-run करती है one by one. आपको इसमें mouse की need नहीं होगी. The rehearse timing features helps you to find how much time we would need to present a slide and what would be the total time required. The total time required क्या होगा, and set the timing. To set the timing, you have to follow the step. सबसे पहले आप slide show tab पे जाएंगे. Rehearse timing के ऑप्शन पर को जाके क्लिक करेंगे और सेटअप ग्रुप. Then the presentation starts playing full screen mode and the recorder toolbar appears and the next button on the recording toolbar. Go through all the slides in the presentation. आप क्या करोगे, go through करोगे जितने भी slides हैं presentation की one by one. And a Microsoft PowerPoint dialog box appears and the timing of the presentation add. Click on the yes to accept the time. अगर आपको accepted time है तो आप click करोगे yes. ठीक है? Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.